all. I hope you all are doing well. So children, today in this class, we are going to learn about ratio, proportions and unitary method. So let's start with that. In previous class, we have studied the basic concepts of ratio and proportions. In this chapter, we will revise these concepts and extend our study further beta. So first one is ratio. A ratio is the comparison of two or more quantities of the same kind using division. If A and B are two quantities of the same kind, then ratio of A and B in the same unit is a fractions, just like this A is B. Okay, it is generally written as A colon B and read as A is to B. Okay, now term of ratio. So in the ratio A divided by B means A is called the first term and antecedents and B is called the second terms or consequents. Now equivalent ratios, a ratio obtained by multiplying or dividing both the terms of a given ratio by the same non-zero quantity is equivalent to the given ratio. So if A is to B is the ratio and M is not equal to 0, then we have A divided by B is equal to MA divided by MB, और A is to B, और is equal to हम बोल सकते हैं MA is to MB. Okay, and B part is given. A हमारा divided है by B से, so A is like slash M divided by B slash M is equal to A is to power B, that is A by M, and is to power B is M. This is how we just write and read it. Okay, now next is beta ratio in simplest or lowest form. So the ratio A is to B is said to be in the simplest form if the HCF of A and B is 1. Okay, now note both the term of a ratio must be in the same unit. Just remember it. Ratios are relative comparisons and would be same for many different situations. A is to B is not the same as B is to A beta. Now solve examples. Example number 1. Express the ratio 27 is to 72 in the simplest forms. Solution. HCF of 27 and 72 is 9. Therefore 27 is to 72 बेटा अगर हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे so हमारा आंसर आएगा 3 is to 8. Okay. Now example 2. Express the following ratios in the simplest form. So first one is 0.6 is to 0.8. तो सबसे पहले हमने इसको fractions form में लिख दिया and then after simplifying answer is 3 is to 4. Okay. So this is very easy. B part में हमने क्या करना है 1 by 2 is to 1 by 6 is to 1 by 8. So first we just take the LCM of that number. LCM लेंगे तो हमारा आंसर आया 24 and after that हम क्या करेंगे इसको simplify करेंगे और हमारा आंसर आएगा 12 is to 4 is to 3 बेटा. Okay. So similarly C part just read and practice well. Now example 3. Divide 96 toffees between two children in the ratio 5 is to 7. So sum of the both the term is 5 plus 7 is equal to 12. So first children share, first children ने कितना share करा 12 में से 5, that means 5 upon 12 into 96 and after simplifying answer is 40. Similarly second का कितना share है 7 by 12 कितना 96. So हमने इसको सिंप्लीफाई करा सो हमारा आंसर आया 56. सो दिस इज द आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल द रेशियो 5 by 5 is to 7 का. नाउ एग्जाम्पल 4. फाइंड द रेशियो ऑफ 3 kg to 750 gram. Solution. We know that the units of the two quantities being involved in a ratio should be same. यहाँ पर हमारी केजी और ग्राम है तो सबसे पहले हमें उसको किस में सेम यूनिट में करना पड़ेगा. सो 3 kg मीन्स 3000 ग्राम. ओके. सो अब हमने क्या करना है 3000 का हमने 750 से रेशियो निकालना है. सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग 4 is to 1 इज आवर आंसर. नाउ एग्जाम्पल 5.
Divide 4,500 among x, y, z in the ratio 2:3:4. सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, पहले हम इनको प्लस कर देंगे जो हमारे रेशियोज है. सो 9, x का शेयर कितना है 2/9 इंटू 4500 मीन्स 4,500 का 2/9 हमारा होता है 1000. y का शेयर हमारा कितना हो गया 3/9 के हिसाब से 1500 एंड z का शेयर हो गया हमारा 4/9 इंटू 4,500 इज इक्वल टू बेटा 2,000 रुपीज़. This is how we just do that kind of sums. Now example 6. If a is to b is equal to 5 is to a and b is to c is equal to 18 is to 25, then find a is to c. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया हमने इनको. ओके, आफ्टर दैट जस्ट सिंप्लीफाइंग इट. सो 9 is to 20 इज हमारा इसका क्या निकल गया, a is to c का हमारा रेशियो निकल गया. नाउ ऑल्टरनेटली हम क्या करेंगे, a is to b 5/8 और b is to c हमारा निकला 18/25. मेकिंग b कॉमन इन बोथ साइड वी गेट, बोथ साइड में हम क्या करेंगे b को कॉमन लेंगे और b इज इक्वल इन बोथ रेशियो. सो हम क्या करेंगे a is to b is to c हमारा कितना बन गया नाउ 45 is to 72 is to 100. सो a is to c हमारा क्या बना, yes 45 is to 100 beta. I hope you understood well. So after that 45/100 is equal to 9/20. Then AC हमारा कितना निकला 9 is to 20. This is how we just do that. Now example 7. The salary of Jitin increases in the ratio of 3:5. His original salary was 7,500. Find his new salary. सॉल्यूशन, ओरिजिनल सैलरी कितनी है 7,500 रुपीज़. लाइक दैट इंक्रीज हुई उसकी सैलरी कितने रेशियो में हुई 3:5. नाउ न्यू सैलरी कितनी बनी हमारी 5/3 ऑफ 7,500. आफ्टर सिंप्लीफाइंग हमारे जो वैल्यू आती है बेटा वो आती है हमारी 12,500. तो ये हमारी उसकी क्या है निकली, न्यू सैलरी निकली. Okay, I hope you understood. Now example 8. If two numbers are in the ratio of 5:6 and on reducing each term by 8, the new ratio becomes 4:5. Find the two numbers. Okay, so let the two number be 5x and 6x like that. According to the question, 5x minus 8 is divided by 6x minus 8 हमारा कितना आया 4:5 मीन्स 4/5. आफ्टर सिंप्लीफाइंग आर आंसर इज x हमारा कितना निकला 8. नाउ 5x मीन्स 5 into 8 40 and 6x means 6 into 8 48. So the two numbers are 40 and 48. Okay, I hope you understood beta. Now example 9. Which is greater 2:3 or 1:7? So we can compare ratios just as we compare fractions. So 2:3 means 2/3, 1:7 means 1/7. So हम क्या करेंगे, जस्ट इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. So 2 7s are 14, 3 1s are 3. So we know that 14 is bigger than 3. So 2:3 is bigger than 1/7. So it's very easy. Okay. Now example 10. Students of a school have been divided into two groups in the ratio 6:11. If the first group has 870 students, how many students are there in all in the school? Okay, so सबसे पहले हम क्या करेंगे, sum of the term of the ratio कितनी है हमारी 17. Now let x be the total number. x हमारे कितने total number of student है. So the number of student in the first group is 6/17 of x. So कितना हो गया हमारा 870 हमारे हो गए इस बराबर 617 of x. Now we just find out the x value and after simplifying the total number of student in the school is 2,465. I hope you understood. Now next one beta. So now next beta. Example 11. The price of a refrigerator and a washing machines are in the ratio of 12:5.
If the refrigerator cost rupees 14,000 more than the washing machine, what is the price of the washing machine? So, solutions. Let the price of the refrigerator and washing machine be 12x and 5x rupees respectively. So, given है हमारा 12x minus 5x हमारा कितने होते हैं? Yes, 14,000. So, हमारी x की वैल्यू निकल गई बेटा 2,000. Now, price of washing machine, हमारी प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितनी है? 5 टाइम्स. सो 5 into 2,000 दैट इज बिकम 10,000 rupees. I hope you understood. Now example 12 also. Suman has 18,800 in the denominations of rupees 50, 20 and 10 in the ratio of 5:9:4. Find the numbers of notes of each denomination. So solutions. Let the number of 50, 20 and 10 notes be 5x, 9x and 4x respectively. According to the question now, total amount हमारा कितना है? Yes, this is 18,800. Now 50 into 5x, 20 into 9x और 10 into 4x हमारे कितने होते हैं? 18,800 इन सबको मिलाकर. So after simplifying that, x की वैल्यू निकली हमारी 40. Now 5x हमारा कितना हो गया? Just put the value of x. So 540 200, 940 360 और 4x की वैल्यू हमारी निकल गई 160. So we can say that the number of rupees 50, rupees 20 and rupees 10 notes of is 200, 360 and 160 respectively. Okay, I hope you understood. Now beta move on exercise 8.1. Express each of the following ratios in the simplest form. So first one is 0.4 is to 0.6. So now solution. So here it is given 0.4 is to 0.6. So we just divide it 0.4, 0.6. अब हम क्या करेंगे इसको 4/6 डेसिमल रिमूव करेंगे. So multiply by 10. Here it is multiply by also 10. So it is become now 40/60. So अगर हम इसको simplify करेंगे so 2/3 is our answer beta. Okay. So this is how we just do that kind of sums. I hope you understood well. So now next proportions. 4 numbers A, B, C, D are said to be in a proportions if A is to B is equal to C is to D. We write it as A is to B is proportions C is to D and read it as A ratio B is proportionals to C ratio D. Here all the 4 numbers are terms of the proportions where A and D are called the extreme while B and C are called the means. Product of extremes is equal to product of means. D is called the 4th proportions to A, B and C beta. Now note, if A is to B is proportionals B is to C, then A, B, C are said to be in a continued proportion. Okay, and C is the 3rd proportionals to A, B and 4th proportionals to A, B, B. 4th one is A divided by B is equal to B divided by C is same as AC is equal to B square is equal to B, and like that this is square root AC, where B is the mean proportionals or the geometrical means between A and C. I hope you understood. Now solve examples. Example number 1. Show that 9, 36, 16, 64 are in proportion. Solutions. Here 9 and 64 are the extreme and 36 and 16 are the means. To check if the given numbers are in proportions, let's check whether the product of extremes and the product of means are equal or not. So let's see. So product of means is 36 into 16 हमारे होते हैं 576 और extreme का हमारा होता है 576. That means they are in a proportion beta. Okay. Now example 2. Determine whether the following numbers are in proportions or not. So हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक्सट्रीम के प्रोडक्ट को करेंगे. So मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आया 1.08.
मीन का प्रोडक्ट किया 1.08, सो दे आर इन प्रोपोर्शंस। सिमिलरली बी पार्ट में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक्सट्रीम की वैल्यू देन मीन की वैल्यू, सो इट्स नॉट इन प्रोपोर्शंस बिकॉज 1/27 on here is 1/40, so we can say that they are not in a proportion way. I hope you understood. Now example 3. If 25, 35 x are in continued proportions, find the value of x. तो अब हम क्या करेंगे, 25 into x हमारा कितना हो जाएगा, 35 into 30. Now just we find out the x की value, so answer is beta 49. So 25, 35 x to be in a continued proportions beta. Okay. Now example 4. Find the value of x in the proportions 2 1/2 is to x. Proportion में हमारा 3 1/2 is to 4. So हम सबसे पहले क्या करेंगे, the proportions can be written, mixed को हमने improper में लिख लिया like that way, और उसके बाद हम क्या करेंगे, the 4 numbers are in proportions. कब होते हैं हमारे proportions में, जब हमारा product of extreme हमारा equal होता है product of means के. So we just put the value of extreme और mean की यहाँ पर लिखी हमने. Now just x की value हमने find out करी 20/7 and after simplifying it we just find out the x की value. This is 2/6/7. I hope you understood. Now beta example 5. Find the third proportionals to 4 and 20. Okay. So let the third proportionals to 4 and 20 be x. Then x is also the fourth proportionals to 4, 20 and 20. Now next, thus we have 4 is to 20 proportionals, 20 is to x. So 4x कितना हो जाएगा, 20 20, x की वैल्यू हमारी इस तरीके से बन जाएगी 100. So the third proportionals क्या बना हमारा, yes it is 100. Now example 6. Find the fourth proportionals to 4.8, 1.6, 5.4. So suppose the fourth proportionals be x, then 4.8, 1.6, 5.4 and x क्या हो गए हमारे proportions में. तो product of extreme, product of means, just put the value and after simplifying answer is beta yes 1.8. Okay, so this is how we just do that kind of sum. Now just see example 7. Find the mean proportionals between 8 and 32. So let the mean proportionals between 8 and 32 हमारा वो क्या है, x मान के चलेंगे. So हम क्या करेंगे, just put the value 8 is to x is to 32. So x की वैल्यू हमारी कितनी निकली, 16 into 16, x की पावर 2 16 into 16. So हमारा सिंगल x निकल गया 16. तो मीन प्रोपोर्शनल्स बिटवीन 8 and 32 हमारा आया आंसर 16. ओके. नाउ एग्जाम्पल 8. फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल्स बिटवीन 1/4 and 1/25. सो लेट x बी द मीन. ओके. सो हमने क्या करना है, x की पावर 2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/25. हमारा कितना होना चाहिए, कितना हुआ 1/100. सो x को क्या करेंगे 1/100 इज इक्वल टू रूट 1/100. ये क्या बना हमारा 1/10. सो 1/10 इज द मीन प्रोपोर्शनल्स बिटवीन 1/4 and 1/25. So this is how we just find the mean. Okay. Now example 9. At a particular time, the shadow of a pole and tower are respectively 20 meter and 30 meter. If the height of the tower is 48 meter, then height of the pole हमने find करना है pole की height. So ratio हमारी कितनी दे रखी है, shadow की ratio of height के is equal to. So let x be the height of the pole, then 20 is to 30 equal to x is to 48. Then 20 30 ये हमारा हो गया और x 48 हमारा ये हो गया. We just find the x की वैल्यू हमारा इस तरीके से बना 32. So we can say that beta height of the pole is 32 meter. Hope you understood. Now move on next one. Example 10. A train covered the distance of 3000 km in 5 hours.
5 घंटे में 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है ट्रेन. सो हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर्ड इफ इट ट्रेवल्स इन 7 आवर्स. सो हम क्या करेंगे, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन. सो लेट द डिस्टेंस ट्रेवल इन 7 आवर बी x. सो हमारा ये बन जाएगा 3000 is to x is equal to 5 is to 7. So after just simplifying, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4200. So the distance covered in 7 hours is 4200 kilometer beta. I hope you understood. Now move on exercise 8.2. Determine whether the following numbers are in proportion or not. So let's see. First one is given. हमारे पास यहाँ पर क्या है 12, ये है हमारे 15, दिस इज 4 एंड दिस इज 5. सो एक्सट्रीम क्या है हमारे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 12 इंटू 5. सो हमारे ये कितने हो गए 60. और हमारा नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. मीन्स का क्या हमारा प्रोडक्ट निकलता है, 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से. सो ये है हमारा 60. तो यहाँ भी 60, ये भी 60. तो हम कहेंगे यस यस दे आर इन प्रोपोर्शंस. ओके, प्रोपोर्शन बेटा. This is how we just do that kind of sums beta. I hope you understood well. So now move on next, which is unitary method. You have already been introduced to the concept of unitary method in the previous class. The following examples will help you to strengthen your understanding further. The method of finding the value of the required number of a quantity by first finding the value of the unit quantity is called, yes, unitary method. So, solve example. Example number 1. Cost of 7 toy cars is 427. 7 toy cars की हमें cost दे रखी है. What is the cost of 15 such toy cars? So, सबसे पहले हम क्या करेंगे, we just find out the one toy car. So, 7 की given है हमारी 427. तो एक की कितनी हो गई, just divided by 7. So, 61. So now 51 toy car की कितनी कॉस्ट होगी, मल्टीप्लाई बोथ द नंबर एंड आंसर इज 915. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ एग्जांपल 2. 12 bags of sugar weight is 90 kg. ओके, सो हाउ मच विल 20 bags weight. सो 12 bags का वेट 90 है, तो एक का कितना हो जाएगा, जस्ट डिवाइडेड बाय 12. सो 20 का करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 20 और आंसर इज 150 kg. Now example 3. A car runs 120 km in 20 liter of petrol. Okay. How far can it run in 30 liter of petrol? So distance cover करती है 20 liter of petrol में 120. So एक में कितना करेगी, divided by 20, 6 किलोमीटर. Now अब वो कितना करेगी, 30 liters of petrol में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, just multiply by 30 that value. So 180 kilometer. This is the answer. I hope you understood. Now example 4. A scooter consumes 28 liters of petrol in covering 2100 kilometer. How much petrol will be needed to cover a distance of 3600 kilometer? Solution. हमने क्या दे रखा है, 2100 किलोमीटर कवर करती है कितना, 28 लीटर ऑफ पेट्रोल. लाइक दैट वे. सो 1 किलोमीटर कितना कवर करेगी, 28 इंटू 1 बाई 2100 लीटर्स, और 3600 किलोमीटर्स वो करेगी. जस्ट मल्टीप्लाई दैट नंबर एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग कितना उसको लगा, 48 लीटर. ओके, तो स्कूटर ने कंज्यूम कितना किया बेटा, 48 लीटर्स. आई होप यू अंडरस्टूड. Now just see example number 5. The length of the shadow of 5 meter high tree at some point of time is 6 meter. So what is the height of a building whose shadow at the same time is 54 meter long? Okay, see the solutions. If length of shadow is 6 meter और height कितनी है 5, like this.
If length of shadow is 1 meter, height of tree is 5 by 6 meter. If length of shadow is 54 meter, height of building कितनी हो जाएगी? 5 by 6 into 54, answer is 45 meter. Okay, I hope you understood well. So now move on. 6. 26 cartons of 15 apples each cost rupees 2,145. Find the cost of 40 cartons of 18 apples each. Solution. Number of apples एक कार्टन में कितने आते हैं हमारे? 15. Number of apples in 26 cartons में कितने आएंगे? Just multiply both the numbers. 390. After that, number of apples in one carton 18. Then number of apples in 40 cartons, जब एक में 18 है तो 40 में कितने आ जाएंगे? Multiply both the numbers 720. Like that way. Now cost of 390 apples हमारी है 2145. तो एक की कितनी निकल जाएगी हमारी? Just divide by 1 by 390 and then 720 की cost निकल जाएगी. Multiply by 720 and answer is बेटा rupees 3,960. I hope you understood. Now move on exercise 8.3. So 16 articles cost rupees 72. 16 articles जो हमारे 72 के आते हैं. What will be the cost of 30 articles? तो 30 articles की cost कितने हो जाएंगे? And how many articles can be bought for rupees 207? Okay, so हम क्या करेंगे? 16 articles की cost दे रखी है 72 और हमें क्या करना है? कॉस्ट निकालनी है 30 आर्टिकल्स की. तो सबसे पहले हमें एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी. सो लेट्स स्टार्ट. एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले जस्ट डिवाइडेड बाय 16 लाइक दिस. सो 16 4 जा 64. 72 में से 64 गए 80. डेसिमल लगा के हम ले लेंगे 0. इट बिकम्स 80. 64 5 जा हमारे होते हैं 80. तो ये हमारी कितनी निकल गई? एक आर्टिकल की कॉस्ट निकल गई. अब हमें कितनी की निकालनी है? अब हमें 30 की निकालनी है. सो मल्टीप्लाई दैट नंबर विथ 30. सो 30 को हम 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 0 0 5 3 ज़ा 15. मल्टीप्लाई 4 0 0 4 3 ज़ा 12. सो 0 5 2 और 1 3 और 1. एक के बाद डेसिमल है. जस्ट पुट डेसिमल विद आफ्टर 1 डिजिट. नाउ अब हमें क्या निकालनी है? हाउ मैनी आर्टिकल्स कैन बी बॉट फॉर रुपीज़ 207. 207 में कितने आर्टिकल्स वो खरीदेगा? सो अब हम क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड कर देंगे. सो हम जस्ट करते हैं 4.5 में डिवाइडेड बाय 207. ओके, क्योंकि हमारी एक की कॉस्ट निकली थी ये और हमारे टोटल कितने रुपीज़ है? 207. सो हम क्या करेंगे? 4 जा लेंगे. सो इट इज़ 18. 20 में से 18 गया 2. ऊपर से उतरा 7 एंड दिस इज 6 एंड 4.5 6 जा 27 एंड 27 में से 27 गए. सो 46. तो हम कहेंगे येस 46 आर्टिकल्स कैन बी बॉट फॉर रुपीज़ 207. So this is our answer. I hope you understood well. So these are the other questions. You have to complete it your own. Okay, beta? So with this we ended the chapter. I hope you understood. So you just do practice and do rest of these exercises by your own.